Hello students, Meenakshi Sinha is here from Concept of Physics. Previous videos मेरे velocities related थे, motion related थे. इसके आगे मैं स्टेपिंग कर रही हूँ जिसमें मैंने आपको पिछली बार डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ के बारे में बताया था. Now I am going to deal with the graph of velocity and time. उससे आपका डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूलाज जो तीन फॉर्मूले हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2az, v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर. इसके फॉर्मूला का डेरिवेशन भी बताऊंगी. उसके अलावा एक बार मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज और एवरेज वेलोसिटीज के बारे में भी बताऊंगी. एवरेज वेलोसिटी जो होती है जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इट मीन्स नाइदर द डायरेक्शन इज गोइंग टू बी चेंज एंड नॉट द distance traced by the body in a particular interval of the time is going to be changed. एक निश्चित समय में निश्चित दूरी ही वो तय कर रही है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है. आज जो वेलोसिटी चल रही है, अभी जो वेलोसिटी आपने किसी बॉडी की नोट करी, आफ्टर द इंटरवल ऑफ द टाइम 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद भी वही स्पीड उसकी रहेगी. इट मीन्स दैट और डायरेक्शन भी वही रहेगा. इट मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज देयर, कि वो समान वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. ठीक है. और अगर आज इस समय उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा वेलोसिटी है, अगले घंटे उसका 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, अगले घंटे उसका 30 घंटे 20 ना को 25 हो जाती है, अगले घंटे उसके फिर 40 हो जाती है. तो इसका मतलब इंडिविजुअल घंटों में उसकी वेलोसिटी अलग अलग है, उसका वेग अलग अलग है. किसी घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है, किसी घंटे में 30 चल रही है, किसी में 25 चल रही है, किसी में 40 चल रही है. कोई उसका पर्टिकुलर अमाउंट एक घंटे में ट्रेस करने का नहीं है. कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है. और किस अमाउंट से बढ़ रही है, घट रही है, ये भी कोई निश्चित नहीं है. लेकिन डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है. उस केस में हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे उसको, और उसका अंदर एवरेज वेलोसिटी निकाली जाएगी. ये हमेशा नोट कर लीजिए दैट you should be it is to be noted by you that never and never uniform velocity में we can't calculate the uniform velocity, or in uniform velocity we can't calculate the average velocity. In uniform velocity we can't calculate the average velocity. Average velocity will be calculated only if there is non-uniform velocity. अब उस तरह की जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो इंटरवल ऑफ द टाइम के संग उसकी वेलोसिटी की अमाउंट जगह जगह पे चेंज हो रही है, उस केस में हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. यानी कि सपोज ये वाली वेलोसिटी इस इंटरवल ऑफ द टाइम, ये t1, ये t2, ये t3 इंटरवल ऑफ द टाइम है. इसको लंबाई ये है t1, t2, t3. लेकिन इस इंटरवल ऑफ द टाइम में ये 10 किलोमीटर चलती है. इस इंटरवल, ये इंटरवल बराबर है, सब इंटरवल बराबर. t1 और t2 ये भी 1 घंटा है, ये फर्स्ट 1 घंटा, ये सेकंड 1 घंटा है, ये थर्ड 1 घंटा है. सब एक घंटे के हैं, एक आवर है. बट इसमें डिस्टेंस 10 किलोमीटर चल रही है, इसमें आपकी 20 किलोमीटर चल रही है, यहाँ इसने 15 किलोमीटर चल रही है, इस वाले इसने उसके बाद उसने फिर से 10 किलोमीटर चल दिया t4 में. तो इसका जो डिस्टेंस है ट्रेस्ड विद इन द इंटरवल ऑफ द टाइम, 1 घंटे में कभी 10 हो रहा है, 1 घंटे में किलोमीटर, कभी 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है, कभी 1 घंटे में 15 किलोमीटर चल रही है, कभी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. उस केस में आपकी जो एवरेज वेलोसिटी हो, एवी एवरेज वेलोसिटी, ये बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम. Total time means t1 plus t2 plus t3 plus t4. Displacement means फाइनल से इनिशियल पोजीशन का डिस्टेंस, फाइनल से उसका डिस्टेंस, पूरा उन दोनों का बीच का नियरेस्ट डिस्टेंस. डायरेक्शन विल बी सेम, डायरेक्शन नहीं बदल रहा, ये ध्यान रखिए. लेकिन सपोज अब दूसरी वाली बात, इफ वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज बट अ कांस्टेंट अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट से बदल रही है. इट मीन्स ये इंटरवल ऑफ द टाइम फर्स्ट पहला 1 घंटा, दूसरा 1 घंटा, तीसरा 1 घंटा, यहाँ पे 10 चल रही, यहाँ 15, यानी 5 से बढ़ गई, यहाँ 20 और आगे 25. यानी इसमें इस पहले घंटे में इन दिस फर्स्ट आवर
इसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। नेक्स्ट सेकेंड आवर में उसने 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड ले ली। थर्ड में 20 किलोमीटर आवर ली। हर घंटे उसकी 5 किलोमीटर से बढ़ रही है। In each and every, after each and every hour, the velocity is going to change by 5 kilometer. Then it is a constant change. It means acceleration is here. Continuing acceleration or retardation. Retardation भी हो सकता है। उस केस में हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, v एवरेज बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये आपको नोट करना है। डायरेक्शन दोनों के केस में सेम है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, ये बड़ा नोटेबल पॉइंट है। इसको पॉइंट के बताने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड वेलोसिटी। This will help you in order to derive the three velocity formulas. We will consider this. इसको देखते हैं। How can we do it? ये हमें देखना है। Velocity versus time graph. Velocities versus time graph. मान लीजिए this is the interval t1 and t2. This is the interval time. इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी u थी. It means this one. Here it was u. और after interval of the time, the velocity get is equal to v. It means this distance is equal to v. This is velocity. And this amount is u. Initial velocity u थी at the interval of time this t1, ये वाली t1 और t2, ये सब। ये आपका ग्राफ है वेरिएशन इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। Initially, the body was moving with the velocity u. After the interval of the time t, इसको ये interval of the time t है, suppose यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी velocity जो हो गई, ये हो गई v, यहाँ पे v हो गई velocity, ये u है, okay? तो rate of change of the velocity is known as the acceleration. ये हमें याद रखना है। Now, अब हमें निकालना है सपोज डिस्टेंस। वीटी ग्राफ में डिस्टेंस लिखना है, ट्रेस डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, जनरल फॉर्मूला। ये हमें ध्यान रखना है व्हेन एवर वी आर गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन टू वेरिएबल्स बाय मल्टीपल ऑफ विच we are getting a third variable, then always we have to measure the area from the graph. यहाँ पे हमने velocity और time के बीच में versus के बीच में we have plotted the graph. The multiple of these three will give us you the distance. It means हमें area निकालना है। ये याद रखिए, जब कभी दो variables की graph खींचे हुए हैं, उनके multiple से जो term आएगी वो area से निकाली जा सकती है, ठीक है? फॉर्मूले में पढ़िए। तो अब हम इसका मतलब है डिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन बाय द एरिया ट्रेस बाय दिस कर्व। तो दिस एरिया विल बी इक्वल टू दिस पोर्शन, ओके, दिस पोर्शन, ठीक है ना? तो दिस एरिया कैन बी विल बी इक्वल टू 1/2 रेट ऑफ चेंज कितना हुआ, v से u कितना हो गया, रेट कितनी चेंज हुई, v से u हो गई, v से u रेट हो गई, इसलिए कितने इंटरवल ऑफ द टाइम में, t में। और ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसलिए v इज इक्वल टू v माइनस u
upon t is equal to a. We know it. This is the definition of acceleration. V minus u, rate of change of velocity with respect to time, is known as the acceleration. So V is equal to at. V minus u is equal to at. V is equal to u plus at. This is the first formula जो हमने ड्राइव कर लिया. Okay, this is from the definition of this acceleration. अब हमें दूसरा फॉर्मूला निकालना है. V is equal to S is equal to ut plus 1 by 2 gt square and v square is equal to u square plus at square. Now S कैसे निकालेगा? डिस्टेंस से, इस वाले डिस्टेंस से. ये डिस्टेंस पूरा एरिया ये हमें निकालना पड़ेगा. दिस एरिया विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेस बाय द बॉडी. क्योंकि फॉर्मूले कर्व किस बीच में है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में. वेलोसिटी और टाइम के बीच में कर्व है. इनका मल्टीपल कर देंगे तो डेफिनेशन के हिसाब से डिस्टेंस निकलना चाहिए. तो हम डिस्टेंस हमारा आ जाएगा इसके एरिया से. तो एरिया विल बी ऑब्टेन दिस एरिया प्लस दिस एरिया. इसका नाम लिख देते हैं. लेट अस सपोज दिस इज ए. वी विल राइट इट फ्रॉम विद रेड पेन. दिस इज ए बी सी डी ई. दीज आर द 3 पॉइंट. So area of the, it means area of this plotted area will be give the distance. Now what we can do it for this total area of A, B, C, D, E is equal to, this is distance, is equal to area of triangle CDE plus area of rectangle ABCE. This is S will be equal to area 1 by 2 base into height. It means EC into DC plus area of this cube, this into this, CB into AB. Now this is 1 by 2 EC. EC is nothing but T. DC, this is equal to V minus U. This DC is DC minus CB, and CB is equal to U. That is V minus U. देखिए DC will be DB minus CB. DB is equal to V and CB is equal to U. ये U plus DB is equal to V and CB is equal to E से is equal to U. Now CB is equal to U. AB is equal to T. AB is equal to T is also equal to EC. Okay, and DC is equal to DB minus CB or DB minus EA is equal to V minus U. ये आपको नोट करना है. इसको सॉल्व कीजिए. विल गेट हियर S is equal to 1 by 2 V minus U. This is, यहाँ से देखिए V minus U can be written as AT from the first formula. V minus U, in place of V minus U we can write AT as per first formula. V minus U upon acceleration, definition of acceleration. V minus U upon T is equal to A. It means V minus U is equal to AT. Here we can write AT. AT. And 1T is already there. It means T square plus UT. This is the second formula. Proved. This is the second formula we have derived. Now the third one. थर्ड हम देखना है. थर्ड कैसे निकालेंगे कि एरिया हमेशा डिफाइन क्या करता है? डिस्टेंस.
एरिया क्या डिफाइन करता है? डिस्टेंस. अब दूसरा तरीका निकालते हैं. दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ टू डिफाइन द एरिया. द सेकंड प्रोसेस, एरिया. एरिया विल बी ऑलवेज इज इक्वल टू एस. ये कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ डायरेक्ट एबीसी ऑफ ए बी सी डी ई. ये दूसरा प्रोसेस है, एडिशन ऑफ दीज टू आर्म्स. इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज, हिंदी में इसको समलंब कहते हैं. The two lines are parallel to each other, so that we can write it as EQ plus DC, EA plus DB by 2 into the distance, perpendicular distance between them, that is AB. ये भी लिखा जा सकता है. Same area can be written in this way also. So this is equal to EA. EA is equal to U plus DB. DB is equal to V by 2 into AB. AB is equal to T. AB is equal to P. Now, T फिर से from here by using the same thing. Further from here पहला वाला formula, from here T can be written as V minus U by A. इसी फॉर्मूले से, सेम फॉर्मूला, इन प्लेस ऑफ T we have to write V minus U. So this can be written as U plus V by 2 into V minus U by A. Okay? ये V minus U by A. अब ये V, U plus V and V minus U and V plus U. It means this can be written as V square minus U square upon 2 times A. This is nothing but equal to S. S के बराबर हो गया. Then the same formula is that 2AS. This will be equal to V square minus U square. Or we can say V square is equal to U square plus 2AS. This is the third formula. This is third one. ये आपका तीसरा formula है. This is third one. Now, this is the way to derive the formula by means of graphical presentation. With the help of graph between velocity and time, we can derive all these three formulas. Except this formula should be always in your mind, otherwise you can't solve the questions related with the velocity, initial velocity, final velocity, time taken, distance and acceleration. So, in these three equations, you have seen कि आपने देखा that we are having in each equations 4 variables. We are always having 4 variables. Excuse me. 4 वेरिएबल है हर एक चीज में. पहली इक्वेशन देखिए, इस वाली इक्वेशन में देखिए, U इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन, S इज द डिस्टेंस, V इज द फाइनल वेलोसिटी. 1 2 3 4 वेरिएबल इन दिस इक्वेशन. This equation, S is the distance, A is the acceleration, T is the time taken, U is the initial velocity. 1 2 3 4 variable. First equation was V is equal to U plus AT. 1 2 3 4. Each and every equation contains 4 variable. It means in the question, if 3 variables are given, 4th can be obtained by means of these, with the help of these 3
formulas. So that these are three formula which are always to be memorized. हमेशा याद करना रखना पड़ेगा. In next video, I will solve some questions related with this equation. How can you measure it? How can you assume it? एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेके चलिए. वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी. एक बॉल को ऊपर फेंकना. When you are going to start the ball throw upward, then initial velocity is what happening. It can't be zero if you are throwing the ball upward, just horizontally upward against the gravity. And due to that gravity, the velocity you have given in the starting one gets lost by a definite amount per second, and afterward getting lost, it becomes zero at the top, and then because of this gravity, again come back towards the horizontally downward. At the top moment, the velocity, final velocity will be zero. The starting velocity was somewhat having the value, and at the top it is zero. And when you are throwing downward, then the initial velocity is zero, and final velocity at the ground will be somewhat. So, इसलिए in that case, acceleration is there because velocity is going to increase up to last moment up to the ground level. And in that case, body, when we are going to throw the ball upward, the body is reducing its velocity. It means there is retardation, just negative acceleration, you can say. So in that case, we have to measure which velocity will be zero and which velocity will be maximum. In both the cases, they will be reversed. This is to be noted. In next video, we will solve some type of the numerical problem of this. Please, अगर आपको समझ में आ गया है, then I am very much happy. I am very happy to see that you are enjoying this video. आप इसी तरह मुझे मोटिवेशन देते रहे. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी इससे रिलेटेड. आपको अपनी भाषा में जो बात समझ में आती है वो दूसरी भाषा में नहीं आती, ये मैं जानती हूँ. इसलिए मैं थोड़ा इंग्लिश में भी कोशिश करती हूँ, हिंदी में भी करती हूँ, हिंदी में भी करती हूँ. दोनों तरह के बच्चों को मेरी बात समझ में आ जाए, मेरा कॉन्सेप्ट यही है. प्लीज़ गुड नाइट टू यू और गुड लक फॉर यू. प्लीज़ कीप ज्वाइनिंग मी और देखते रहिए, समझते रहिए, बिल्कुल ठीक अच्छी